Hey guys, what's up and welcome to episode 25 of Hogwarts Legacy. सो अभी अपने पास फिलहाल अपन फोर्थ ट्राई एंड फाइनल ट्रायल के काफ़ी क्लोज है। ये वन ऑफ द मतलब एंड गेम मिशंस है, यानी कि अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा और 4-5 एपिसोड्स रहेंगे, गेम रैप अप हो जाना चाहिए। एनीवेज वो अपन आज नहीं करने वाले। सेबेस्टियन का एक मिशन आया है जिसमें आवरा का डावरा अपन को रिवॉर्ड मिल रहा है, जो अपना फाइनल अनफॉरगिवेबल कर्ज है। तो मुझे लग रहा है सेबेस्टियन के मिशंस का आखिरी पार्ट हो सकता है। उसके अलावा पॉपी का एक मिशन है, तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में अपन सेंचोर्स वगैरह से मिले थे एंड उन्होंने अपन को बताया था कि स्निगेट का लोकेशन ढूंढने के लिए। स्निगेट एक काइंड ऑफ रेयर क्रिएचर है जिसे पोर्चर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों मिशन अपन आज करने वाले हैं। अच्छा, पिछले एपिसोड में हमें ये पता चला कि लॉर्ड गॉग जो गॉब्लिन था जो अपनी मदद कर रहा था, वो एक्चुअली रैनरॉक का भाई है। एंड लॉर्ड गॉग के पास एक बुक थी, फाइनल बुक थी, जिसमें जो लास्ट लोकेशन है पावर, जहाँ पे ये पावर इकट्ठा करके रखा है इसाडोरा ने, उस लोकेशन को वहाँ पे बताया गया है। तो अभी जो है रैनरॉक ने लॉर्ड गॉग को मार दिया एंड वो बुक रैनरॉक के पास है। तो अपन को आई गेस फाइनल ट्रायल जब कंप्लीट करेंगे तो ही पता चलेगा आखिरी लोकेशन कौन सा है। उसके अलावा क्योंकि रैनरॉक को बुक मिल गया था तो उसे अभी विक्टर रूकवुड की ज़रूरत नहीं थी, उसका जो दूसरा विजार्ड साथी था, है ना। तो वो दोनों भी आपस में झगड़ लेते, लेकिन आई गेस अपन क्लियरली देख नहीं पाते उधर हुआ क्या। एक्चुअली वो पूरा एरिया कोलैप्स हो जाता है केव एंड अपन वहाँ से बच के निकलते। लेकिन मुझे लग रहा है रूकवुड और रैनरॉक दोनों ही अभी जिंदा है, ये दोनों ही विलन है गेम के, लेकिन आई गेस अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, अभी ये लोग साथ में नहीं है। एनीवे सबसे पहले सेबेस्टियन का मिशन करते हैं। इसके लिए अपन को ओमिनस से बात करनी है। आई थिंक फेलक्रॉफ्ट के आसपास ही कहीं पे, कोई रूइंस के बाहर कहीं पे। ये रहा। तो सेबेस्टियन के मिशंस के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि अगर तुम्हें अनफॉरगिवेबल कर्सेस चाहिए तो तुम्हें सेबेस्टियन के ये साइड मिशंस करने पड़ेंगे। एंड उसके अलावा वो जो सही समझता है ना, तुम्हें भी उसी में हामी भरनी पड़ेगी। अगर तुमने नेगेटिव बोल दिया कि नहीं कर्सेस यूज करना ठीक नहीं है, ऐसा समथिंग कुछ डायलॉग, तो वो तुम्हें कर्सेस सिखाता नहीं है। There's no telling what lies in wait for me in there. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Inferi तो अपन को पता है ना, Sebastian must not be in his right zombie टाइप mind. के क्रिएचर्स। एक्चुअली लास्ट एपिसोड में अपन यहाँ पे आए थे, पिछले एपिसोड के एंड में, तब यहाँ पे ओमिनस और एन दोनों ही थे। आई गेस वो रात का टाइम था, तो मे भी हो सकता है रात के टाइम पे दोनों ही अवेलेबल रही यहाँ पे। Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. यही से उठाया था क्या अपन ने वो रेलिक? शायद हो सकता है। आई गेस अपन ने वो जो सेबेस्टियन के पास जो रेलिक है ना, वो अपन ने यही से उठाया था। Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Incendio! Leviosa! Fringo! Incendio! जाना इसी तरफ है ना, लग तो हो ही रहा है। There weren't this many Inferi before! And there's no sign of Sebastian. Incendio! Incendio! सो इन इंफीरी की खास बात ये है
कि तुम इन पे फायर डैमेज करने के बाद ही इनको कोई भी एक्चुअल डैमेज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये बंदा जल नहीं रहा है ना, ये इसको कोई डैमेज नहीं होगा। Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Solomon uncle. Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Okay. Be careful. ये आधे इसमें फाइट छोड़ के क्यों जा रहा है बट How many Inferi are there? Incendio. Incendio. यहाँ से किधर जाना है? इस तरफ है क्या? I think यही है। हाँ, The यही है। Inferi. They're everywhere. Avada. Incendio. Expelliarmus. Glacier. Defender. Propello. Incendio. ये रूम तो डेड एंड है बट आई गेस अपन को सारे लोकेशन एक्सप्लोर करने हैं। Incendio. कितने इन्फीरियर है भाई हर जगह पे। वो रहा सेबेस्टियन। ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. अरे पकड़ा नहीं। Accio. Wingardium Leviosa. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control. I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this!
Levioso! अरे ये बॉस है। I'm ending this now! That relic was going to save Anne. Incendio. Incendio! Fringo. Levitator! Glacier. Defender. ये बंदा टफ बॉस है थोड़ा। Fringo. You're supposed to protect us. Glacier. I am protecting you, you foolish boy! God, Ringo! Stupid. Defender. Descender. Incendio. Glacier! Incendio. Expelliarmus. Incendiario! Leviosa. Defender. Nectitalo. Stop. Descender. Dare you! You're no threat to my nephew! Fringo. Glacier. Defender. Descender. Glacier. Defender. Leviosa. Now you've gone too far! Incendio. Expelliarmus. Brigator! Accio. Glacier. Descender. मुझे नहीं पता था उसका अंकल बॉस बन के आएगा गेम में। Cannot be healed, Sebastian! You must stop! I won't let her suffer. Avada Kedavra. What the fuck? इसने सीधा आवारा कडावरा चला दिया। अवाडा कडावरा। I guess hand है। Yep. अच्छा वो बुक थी जो अपन सेलेस्टार स्लिदरिन की चेंबर से उठाई थी ना, स्लिदरिन की बुक। You've made your choice. मैंने बताया था ना कि सेबेस्टियन की क्वेस्ट की कुछ डार्क एंडिंग ही रहेंगी, और कोई तरीका है ही नहीं खत्म करने का क्वेस्ट का। What have you done? ओमिनस एंड या उसके अंकल में से कोई ना कोई मरने तो वाला ही था। एंड आई डोंट थिंक इसके ऑल्टरनेट एंडिंग्स है ये साइड क्वेस्ट के ना, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अंकल को सीधा एक बॉस बना के उन्होंने अपने सामने डाला गेम में। Can't let him leave. भाई अभी जा मत, हमें आखिरी कर्ज तो सिखा के जा। Sebastian, wait! मिशन काफी छोटा था, मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा। काफी जल्दी हो गया ना, मतलब सीधा अपन सेबेस्टियन से मिले, इन्फीरी है, उसके अंकल का बॉस फाइट हुआ एंड खत्म। जैसे सेबेस्टियन का साइड क्वेस्ट एक ऐसा साइड क्वेस्ट है जो गेम के स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, स्टार्ट से। मैं बोलूँगा जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स के साइड क्वेस्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इलेबोरेटेड और अच्छे से डिज़ाइन साइड क्वेस्ट सेबेस्टियन के, फिर उसके बाद नैटी और पॉपी का। बट सेबेस्टियन की इसमें तुम्हें 3 स्पेल सीखने को मिलते हैं, इसलिए सेबेस्टियन का काइंड ऑफ इतना इम्पोर्टेंट है।
What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Everyone should know that curse, no one should know that curse. तो अगर तुम no one should know that curse बोलोगे तो चांस है कि तुम वो curse सीख ना पाओ. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Here we go, the final curse, Avada Kedavra. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? आई गेस अब उसके मिशन का फाइनल रैप अप कुछ रहेगा. अंडरक्रॉफ्ट में मीट करने को बोला ना उसने बाद में. पहले पॉपी का मिशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अंडरक्रॉफ्ट का मिशन इसका ट्रिगर हुआ होगा अभी इतने जल्दी. नहीं, यहाँ पे है तो नहीं. एक सेकेंड. अवाडा कडावरा का एक अपग्रेड भी लेना था. किलिंग एन एनिमी विद अवाडा कडावरा विल किल ऑल कर्स्ड एनिमीज. यस, या देयर वी गो. अभी भी 2 टैलेंट पॉइंट्स है. ये तो मैं यूज़ नहीं करता. डिफीटिंग अ कर्स्ड एनिमी रिस्टोर सम हेल्थ. हाँ, उठा ही लेते हैं ये. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारी उठा लिए. डुपल्सो एंड कॉन्फ्रिंग्रो मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो लेने का फ़ायदा नहीं है. बेसिक कास्ट इम्पैक्ट ऑन एयरबॉर्न एनिमीज कंट्रीब्यूट मोर टू द एंशिएंट मैजिक. ब्लॉकिंग परफेक्ट. सक्सेसफुली इवेडिंग और अनब्लॉकेबल अटैक विद डॉज. हाँ, ये उठा लेते हैं. क्या जा रहा है? मेनली तो स्पेल कैटेगरी में ही उठाया मैंने. स्टेल्थ वाले में तो 0 चीज़ें उठाई है, एक भी चीज़ नहीं उठाई है. एंड फिर कौन सा बचता है? हाँ, अपना पोशन एंड प्लांट्स की कैटेगरी में एक मैंड्रेक का एक अपग्रेड उठाया है. एंड अपने ऑडोरस पोशन का जो अपन को थोड़ी देर के लिए इनवल्नरेबल करते हैं उसका अपग्रेड उठाया है. बाकी फोकस पोशन को उठाया ही नहीं क्योंकि मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं किया गेम में फोकस पोशन. वो पीछे रह गया. फोकस पोशन इक्विप कर लेता हूँ, जब भी अगले बार मौका मिलेगा यूज़ करके देखते हैं. वैसे तुम 2-3 अलग पोशन साथ में यूज़ कर सकते हो. फोकस यूज़ कर लिया एंड हाई डैमेज वाला मैक्सिमस ऐसा समथिंग नाम है, वो यूज़ कर लिया. एक के पीछे एक यूज़ कर सकते हो. मैक्सिमा. At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value.
It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Okay, let's go then. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. अपन एपिसोड्स क्योंकि लंबे लंबे कर रहे हैं 1 आवर के आसपास वाली, इसलिए मुझे लग रही है 30 एपिसोड्स तक सीरीज रैप अप हो जाएगा। अगर अपन यूजुअल अपने हाफ आवर 40 मिनट्स वाले एपिसोड करते ना तो आराम से 50 प्लस चले जाता। You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Accio! Revelio! What is going on with them? Bombada! यहाँ पे एक बटरफ्लाई लाके लगानी है। वो कौन से बर्ड्स थे? लूपर्स थे क्या शायद? Vipers. हाँ, फ्लूपर्स ही I थे। beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. If the moonstone is Accio! protected and so are Vipers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? First the Accio! Vipers and now this. नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, ये वो वाला पजल है, अपन ने पहले एक बार किया था ना। इसको खोलने के लिए एक सर्कल एंड ये सर्कल। We need to find moths for those spinners. Lumos! Lumos. ओके, अगला वाला खुलने के लिए सर्कल और Lumos. Accio! इसमें तो लूट चेस्ट निकला। निकला क्या है? अच्छा, 2 सर्कल टाइप वाले। Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Lumos! Lumos. एक और बचा है ना, उसमें भी देख लेते क्या है। We need a circle and this symbol. Accio! Bombada! डिपल से यूज करना पड़ेगा। Repulsor! Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across.
बटरफ्लाइज किधर गई? अबे जो बटरफ्लाइज थी वो किधर गई? मैं इन्हें वापस क्यों नहीं यूज कर पा रहा? हाँ, आ गई। मुझे लगा 2 सेकंड के लिए गायब हो गई वहां से। It's beautiful. ओ भाई, अभी गिरता मैं नीचे। ओके, एक आखिरी बचा हुआ है। You did it! I was hoping we wouldn't have to do this. Expelliarmus! Expelliarmus! Crucible! अब देखो है? What the hell? ये मिस किया क्या? Avada! Incendio! Expelliarmus! Glacius! Defender! Descendo! भाई अवाडा का डाबरा कैसे मिस हो गया? Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. वो ये वही ट्री है ना जो अपन को दिखा था, फ्लावर्स उड़ते हुए जा रहे थे। Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know. Incendio! Given what creatures are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now. I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. Assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Here are Moonstone. We found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. एंच यानी क्या? वो सेंजर्स के ग्रुप को बोल रही है क्या वो? Maybe. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. अच्छा, हेंच कोई We knew we लोकेशन were है। at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went.
Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. क्या लग रहा है पोचर्स आएंगे? Safely say we know where the moonstone goes. ये तो दूसरे एनिमल्स है ना, मून समथिंग, इनका नाम कुछ और है। Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. अच्छा, इसके parents A poachers poach होंगे। camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it growing up with poachers? Do your parents know that you sabotage poachers? Do you worry about being recognized by poachers? Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. So Doran, I guess ये सिंबल को डिकोड करके अपन को स्निजेट्स का लोकेशन बताएगा। ऐसा लगता है क्या कि फाइनल में अपन जो ये साइड क्वेस्ट के एंड में जिन पोचर्स से लड़ेंगे उसमें पॉपी के पेरेंट्स होंगे शायद। चांस कम है, लेकिन अगर रहे तो सही रहेगा वो। Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget
lies in the moonlight. Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. आई गेस ये मिशन रैप अप हो गया. ये और बचा है. मुझे लगा था पॉपी का भी शायद लास्ट मिशन रहेगा, बट अभी डोरन से मिलके स्निजेट्स को भी बचाना है, तो हो सकता है एक और पार्ट हो. नैटी का मिशन भी अभी तक खत्म नहीं हुआ. उसमें लग रहा है नैटी के मिशन के एंड में अपन हार्लो को हराएंगे. हार्लो जो विक्टर रुकुड का राइट हैंड मैन है. विक्टर तो मुझे लग रहा है मेन स्टोरी या ट्रायल वायल के एंड में ही मिलेगा. रैंडॉक और विक्टर दोनों देखते हैं. ओके, सेबेस्टियन का मिशन आ गया. मीट सेबेस्टियन एट द अंडरक्रॉफ्ट. Off on another adventure, are we? She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian, Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि वी शुड टर्न सेबेस्टियन इन, मतलब बेसिकली उसे जेल हो जाएंगे, उसे एस्काबान में डाल देंगे, ऐसा कुछ रहेगा. तो समझ लो अगर तुमने सेबेस्टियन को टर्न इन नहीं किया तो तुम्हारे पास कर्स सीखने का एक और ऑप्शन है. तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर हो सकता है हर बार जब भी कर्सर सीखने का मौका मिले तो सेबेस्टियन पूछता है क्या तुम्हें सीखना है कि नहीं सीखना है. तो हो सकता है तुम स्टार्टिंग में सोचा हो कि मुझे कर्सर्स नहीं सीखने, तो तुमने तब मना कर दिया. बट एंड में अगर तुम उसे बचाओगे यहाँ पे तुम उसे टर्न इन नहीं करोगे तो वो अंडरक्रॉफ्ट में रहता है सेबेस्टियन, एंड तुम आके उससे बात करके तुम वो कर्सर्स गेम के एंड में सीख सकते हो. कुछ लोगों को ऐसा रहता है ना कि कर्स स्टार्टिंग में सीखना, फिर गेम प्ले यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देख लिया एंड सोचा कि नहीं सीखना चाहिए, तो ऐसा तुम सीख सकते हो. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne.
If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. इन्हें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि हॉगवर्ट्स लेगेसी 2 में सेबेस्टियन मतलब और डार्क स्पेल्स वगैरह यूज़ करके कर्सेस यूज़ करके और विलन बन गया एंड बेसिकली हॉगवर्ट्स लेगेसी 2 अगर कभी आए तो उसमें वन ऑफ द मेन विलन सेबेस्टियन है, ऐसा कुछ सही रहेगा वो एकदम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये लोग अपन को कैरेक्टर बनाने के बजाय एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देते हॉगवर्ट्स लेगेसी में, जैसे अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको एक आइडेंटिटी देते, तो गेम थोड़ा और कनेक्टिंग रहता है एंड ये लोग और पार्ट्स बना सकते थे हॉगवर्ट्स लेगेसी 2, 3 ऐसा। ये क्योंकि अभी पूरा मतलब डिफरेंट है कि अपना कैरेक्टर फुल अपन ने डिज़ाइन किया, तो जब हॉगवर्ट्स लेगेसी 2 आएगा तो उसमें भी स्टार्टिंग में तुम अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करोगे, वो भी ऐसा अलग रहेगा। तो उसमें वो एक स्टोरी एलिमेंट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है जब तुम्हारे खुद का मेन कैरेक्टर ना हो ना। अगर जब तुम्हारा खुद का मेन कैरेक्टर नहीं होता है ना, तो फिर तुम्हारा गेम प्ले उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे एल्डन रिंग वगैरह हो गया, जिसमें तुम खुद अपने कैरेक्टर टार्निश को डिज़ाइन करते हो, बट उसका गेम प्ले एंड बॉसेस इतने ज़्यादा मेमोरेबल है कि कोई मेन कैरेक्टर को उतना मिस नहीं करता। ऑन द अदर हैंड इसका गेम प्ले उतना बुरा नहीं है, बट तुम बॉसेस सोच के देखो कि कौन सा बॉस है जो तुम याद करोगे हॉगवर्ट्स लेगेसी ख़त्म करने के बाद कि हाँ ये बॉस इतना अच्छा था करके। एक भी नहीं, फिलहाल तो एक भी नहीं। अब देखते हैं, गेम उतना ज़्यादा बचा नहीं है एंड आई डोंट थिंक रैनरॉक एंड विक्टर रूकोड वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे अभी तक जिनको अपन ने हराया, उनके जैसे ही कुछ होने चाहिए वो भी। आउल पोस्ट में कुछ भी नया नहीं है। सैंडबेकर ट्रायल, हिपोग्रिफ, सॉल्व बेल, मैप। एक काम करते हैं, एपिसोड अपन यहीं पर रैप अप करते हैं। ये एपिसोड दूसरे एपिसोड से थोड़ा छोटा रहेगा, दूसरे एपिसोड अपने 1 आवर के पास रहते हैं, ये 45 मिनट्स के आसपास ही हुआ। बट मैं ये जो अपना फाइनल ट्रायल है वो अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ये एटलीस्ट 30 मिनट्स के आसपास रहने वाला है, 20 to 30 मिनट्स। एंड अभी स्टार्ट किया तो पूरा अपन कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। सो एनीवेज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।